Today, Chief Minister of Uttar Pradesh was in Prayagraj to hand over the keys of 76 flats built under the PM Awas Yojana to poor families. Now, what's exceptional about it, would you say? After all, it is the duty of the state governments to ensure implementation and delivery of central policies. Now, here's what makes this headline worthy. These flats have been made on the land that was once grabbed by gangster Atiq Ahmed and has recently been confiscated by the Yogi government. While giving possession to beneficiaries who were chosen through a lottery system, Chief Minister Yogi Adiyanath said his government has turned the tables when it comes to the way state used to function. No more patronizing mafia while sidelining the poor. याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। ये अपने आप एक महंगे हैं। Of the 76 families that have now got a roof over their heads, there are 7 from the minority community as well, bulldozing what has now become opposition's templated critique of the Yogi Sarkar, that it is biased towards the majority. Listening to the relief and euphoria in their voices, thanking the state for ensuring that they not only live a fearless life, but also one with dignity. बहुत बड़ा दिन है। जो जिंदगी भर का सपना होता है घर का अपना, वो घर अपना हो गया। लेकिन जिस तरीके से योगी जी ने जो पहल की कि एक माफिया की जो जमीन थी उसको सिर्फ न सिर्फ मुक्त कराया, बल्कि आप जैसे जो गरीब लोग हैं या फिर जो असामान्य लोग हैं उनके लिए ये मकान तैयार करवाया। हाँ, योगी जी का बड़ा वो है, इसमें योगदान नहीं होता तो फिर शायद ये जमीन उनसे मिलती नहीं और हम लोगों को मिलती भी नहीं। और मुझे बहुत खुशी है, मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि जो सपना मेरी मम्मी का भी था, मम्मी मेरी नहीं है, मेरे पापा हैं और हम 2 बहन 1 भाई हैं और हम लोग 4 ही लोग हैं, मम्मी नहीं। मेरी मम्मी का सपना भी था और ये मेरा खुद का भी सपना था कि हमें मेरा खुद का मकान हो। आज 30 साल से किराए के मकान में रह रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हर चीज़, इसलिए मैं योगी जी का जितना भी धन्यवाद करूं कम है। सालों का नहीं, जिंदगी का सपना पूरा हो गया। समझिए, सोच भी नहीं सकते थे कि घर मिलेगा, कितने कम कीमत में इतना बड़ा मतलब फ्लैट मिल जाएगा। अतीक अहमद का कितना बड़ा खौफ था प्रयागराज में? बहुत ज्यादा सर, उसके मरने से बहुत ही अच्छे, मतलब अब हम लोग फ्री फील कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का उसका खौफ था ये तो हम लोग कभी सपने में नहीं सोचे थे ये खत्म होगा। वो तो हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ा योगदान है कि उनकी वजह से आज हम लोग निडर हैं, चल सकते हैं। बहुत बड़ा दिन है। जो जिंदगी भर का सपना होता है घर का अपना, वो घर अपना हो गया। लेकिन जिस तरीके से योगी जी ने जो पहल की कि एक माफिया की जो जमीन थी उसको सिर्फ न सिर्फ मुक्त कराया, बल्कि आप जैसे जो गरीब लोग हैं या फिर जो असामान्य लोग हैं उनके लिए ये मकान तैयार करवाया। हाँ, योगी जी का बड़ा वो है, इसमें योगदान नहीं होता तो फिर शायद ये जमीन उनसे मिलती नहीं और हम लोगों को मिलती भी नहीं। It will now be significant to see what those who shed tears for mafia turned politician Atiq Ahmed have to say while patronizing him when in power themselves, and now what they say about what is clearest display of Sabka Saath policy of the BJP government in UP, standing with the deprived without discrimination and demolishing criminals without differentiation. यूपी ने वो समय देखा है जब माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, वहां पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाते थे और कैसे सत्ताधीशों की उसमें हिस्सेदारी हुआ करती थी। लेकिन आज गरीबों के लिए वहां आवासीय कॉम्प्लेक्स बना है। आज 76 गरीब परिवारों को उनको आज उनका आवास का मालिकाना हक मिला है। ये उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव है और एक मैसेज उनके लिए स्पष्ट है कि कोई माफिया अब गरीबों की जमीन कब्जा नहीं कर सकता और कोई गरीब अब बेघर नहीं रह सकता है। ये भरोसा उन गरीबों के मन में है और ये एक अनूठा उदाहरण पूरे देश भर के अलग अलग राज्य की सरकारों के लिए बनेगा कि जो इस प्रकार की भूमाफियाओं के द्वारा कब्जाई गई जमीनें हैं, उन जमीनों का कैसे सदुपयोग करके गरीबों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज को इवेंट बनाना जानती है। जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है, जब उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
Let's go across to our guest. Anila Singh is spokesperson of the BJP. Vinay Singh is political analyst. Joining us, we also have with us IP Singh, spokesperson of the Samajwadi Party. Vivek Bansal is the senior leader of the Congress Party. Let me start first and foremost with Vivek Bansal. Vivek Bansal, what is being stated over here by the UP government is that this is the clearest sort of message of not just a message to criminals, where a land that was grabbed by this mafia don, Atiq Ahmed, has now been returned, in fact, to the poorest of the poor. Hello. And this is a central government scheme that has been implemented. Vivek Bansal, can you hear me? Yeah, no. Would you please repeat it? There was some interruption. Yeah. Land that was occupied by a gangster, a dreaded gangster such as Atiq, has now been redistributed to the poorest of the poor, all within a matter of few months. And what is more, it is clearly a sign of social justice, in that sense that the poorest of the poor are getting affordable housing. This is what the UP government is saying. As far as the question of getting the poorest poor being allotted the houses and all, that's very commendable, I would say. But at the same time, to tom-tomming about that Gunda Raj has finished in Uttar Pradesh, I don't agree with it. A recent example was that how the way the Jiva was killed, and I keep on seeing these sort of incidents happening all around UP, be it in my district, Aligarh, or in adjacent districts. These incidents are happening. But there is, somehow I feel that there is no rule of law. You rest the properties of these criminals who need to be, that is justified. It amounts to, sort of a thing like robbing Peter to pay Paul. And the government should come out with some sort of schemes, delineate, should a roadmap needs to be there, how they are going to accommodate the poorest of the poor. Sir, but there are so many leaders who are crying out when Atiq was killed. That the point is that what do they have to say now? Because they were saying that this is some kind of zulm, this is some kind of excess. Well, I would not like to comment on that. As far as excess is concerned, or what is my viewpoint, or I would not like to go public on that. But as far as criminals, I feel crime needs to be liquidated. Crime needs to be liquidated, but there has to be some rule of law. At the same time, crime needs to be liquidated. You have to finish the crime, as Gandhi said that you should hate the crime, but not the criminals. Criminals, they need to be reformed. Why we go send them to jail? Why there are reformist movement in the jail? Anila Singh, to reform them in the jail. There are Anila Singh, it would be a far cry to say that law and order situation UP has been completely resolved. That claim is not correct. At the same time, there has to be a reform process, is what Vivek Bansal is saying. So he does not agree with what has happened in this case. My Ram to everyone, and Mr. Bansal should check the NCRB facts and figures from the comparative analysis point of view. Then he will come to know that there is a depth. Crime is going southwards in Uttar Pradesh. And that is why we say that you have to have some knowledge before accusing Yogi Adityanath's regime in UP. Secondly, I have to say it is a great moment, it is a proud day for us also, and to all those families who had been allotted the flats by Yogi Adityanath. This land was encroached by a mafia which was being given protection and shelter by the political parties who were using them for their own good. Whether we talk about the appeasement or the terror or other illegal means. So, in reality, Yogi Adityanath has shown that he is a very clear chief minister. He wants to deliver good governance, no place for mafias, criminals, or he is not going to advocate for the dangais or the terrorists. He is going to do what is right for the citizens of Uttar Pradesh, and he is doing so. And the flats had been allotted, not showing any sort of discrimination on the religion or the caste lines. So, this is what the accusation has always been from the opposition. So instead of being happy that poor people have got their residences to live, they are criticizing it. They are not rejoicing it. This is very, very unfortunate. And of course, they are thinking that Yogi Adityanath is setting
a new example in India that you have to demolish crime, criminals, and you have to establish. Let me bring in IP Singh on that. IP Singh, ना सिर्फ क्रिमिनल्स पे इस तरह का एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन जो फ्लैट्स को रिडिस्ट्रीब्यूट किया गया तो सबका साथ सबका विकास का मैसेज भी दिया गया, क्योंकि एक तरह से किसी भी तरह जाति या धर्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई। आप भी जानते हैं कि इन 76 फ्लैट्स में से 7 फ्लैट्स ऐसे व्यक्तियों को दिया गया है जो माइनॉरिटी से बिलोंग करती है। तो ये जो आपका आरोप बार बार लगता रहा है योगी आदित्य सरकार पे, एटलीस्ट इस एग्जांपल में तो सही नहीं है। देखिए, बीजेपी 2014 से जब से सत्ता में आई है, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, होल कंट्री में टोकन पॉलिटिक्स करती है। जैसे बनारस में जब प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा हम क्वेटो बनाएंगे, आज वेटिकन सिटी बन गया है। आज फुटेज पूरे देश में आप उसको देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी के बारे में लोग कहते हैं कि ये चिरौंजी लाल के हसीन सपने देखते हैं, उसके सिवा, सपनों के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी। आज उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, गुंडा राज है, न बेटियां सुरक्षित हैं, न व्यवसायी सुरक्षित हैं, न लोग सुरक्षित हैं। मैं ये कहूंगा कि ये बुलडोजर, अभी आपने देखा, रिसेंटली देखा होगा कि छप्पर के ऊपर बुलडोजर चल गया और ये कह रही है कि छप्पर गिराकर हम लोगों को मकान दे रहे हैं। तो भाई, अगर बुलडोजर चलाना है तो बुलडोजर, हर जिले में 2 माफिया हैं। उन्होंने गंगा में नहाकर बीजेपी का जो पवित्र जल था उससे पवित्र हो गए, वो सबके सब बीजेपी में शामिल हो गए। तो बनारस में बुलडोजर कब चलेगा, मिर्जापुर में बुलडोजर कब चलेगा, गोरखपुर में बुलडोजर कब चलेगा, लखनऊ में बुलडोजर कब चलेगा? ये जनता जानना चाहती है। ये जो आप बुलडोजर के समर्थन में है कि उसके विरोध में है? आपकी पार्टी कई बार बुलडोजर का विरोध कर चुकी है सर। अरे गरीबों के ऊपर ये बुलडोजर चल रहा है। अच्छा, छप्पर गिरा दिए जा रहे हैं। आप बताइए, इन अदालतों, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप बुलडोजर के समर्थन में कि विरोध में? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये बुलडोजर गरीबों के छप्पर गिराए जा रहे हैं। अच्छा, वो भी तो आपको दिखाना चाहिए। ओके, ये माफिया गुंडे बुलडोजर लेकर सरकार के संरक्षण में छप्पर गिरा देते हैं। ये सरकार दावा करती है कि हम गरीबों को, लोगों को मकान दे रहे हैं। ये सरकार झूठ बोलती है। बीजेपी के माफिया, ये सब कुछ झूठ है, ये टोकन पॉलिटिक्स है। बुलडोजर कब चलेगा, बनारस में कब चलेगा, विकास नहीं हुआ है। विनय सिंह, many questions for you coming from IP Singh. Please respond to it. Madhav, the story of this love affair between criminals and politicians started with politicization of criminals and it ended to criminalization of politics. And I'm so happy, the people of this country are so happy that the mafias are stripped of their properties, which is built on the dead bodies of the weaker people, on the oppressed people, on the weaker communities, the SC/ST communities and the minority communities. And I wonder, Madhav, that who is opposed to this pro-poor action by the government? Who is opposed to these allotments of flats to the poor by the Yogi government? I wonder who can oppose and who is in a social or political life. And Madhav, if anybody who is not able to witness the change in Uttar Pradesh in the law and order, I think he has lost his ability to see, he has lost his ability to hear. And my fellow panelist Mr. IP Singh just mentioned that गरीबों के घर पे बुलडोजर चल रहा है. तो I wonder again, Madhav, that Mukhtar Ansari is a garib, Atiq Ahmed is a garib, he is a poor. And again, Madhav, this Atiq Ahmed, his greed went to such an extreme that this Atiq Ahmed ordered rape of minority girls, the madrasa girls, the minor girls, to grab the land of that madrasa. So I wonder again, Madhav, that who are these people, those who are having sympathy for Atiq? Who are these people, Madhav? And they are in social life, they are having sympathy for Atiq. I wonder again. I wonder again. बीजेपी IP सिंह जी जवाब दीजिए। गरीबों के नहीं क्रिमिनल्स के घर तोड़े जाने हैं, ये कहना है विनय सिंह का। और आपकी और इतने क्रिमिनल्स के लिए सहानुभूति क्यों है? क्या वो पॉलिटिकली लिंक्ड है इसलिए? करके आज वो MLC है, वो राज्यसभा में है, वो विधानसभा के अंदर है, वो लोकसभा के अंदर है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है।
और आदित्यनाथ जी को ये बात नहीं भूलनी चाहिए। मैं बार बार ये बीजेपी को याद दिलाता हूं कि जिन संरक्षण की बात करते हैं, क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री स्वर्गीय कल्याण सिंह नहीं थे? क्या स्वर्गीय रामप्रकाश गुप्त बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं थे? आज के डिफेंस मिनिस्टर क्या राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? एक साधारण क्वेश्चन है, की बात करते हुए सुनिए ध्यान से। लेकिन आईपी सिंह जी, एक सेकंड, मेरा सिंपल सवाल है आपसे। मेरा एक सिंपल सवाल है। आप एक तरफ कहते हैं कि कानून व्यवस्था में कोई सुधार, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए, आपको बोलने का मौका मिलेगा। आईपी सिंह जी, सवाल बहुत सिंपल है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था में दिक्कतें हैं, दूसरी तरफ जब माफियाओं पर क्रैकडाउन होता है उसका भी आप स्वागत नहीं करते हैं, तो ये कैसा तर्क है? समाजवादी पार्टी ने किया, समाजवादी पार्टी ने क्या किया? अतीक अहमद का समर्थन किया, ये कह रहे हैं आप? मुख्तार अंसारी गरीब भाई, अगर आप मेरी बात म्यूट कर दे रहे हैं तो आपको सुनाई कैसे देगा? तो आप सवाल का जवाब भी तो दीजिए। आप डिबेट में हैं, आप यहाँ भाषण देने के लिए नहीं आए। रमेश कालिया का इनकाउंटर आपने बहुत सिंपल सवाल पूछा है मैंने। आप एक तरफ कहते हैं कानून व्यवस्था खराब है और जब क्रैकडाउन होती है उस पर भी आप विरोध जताते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, अपराधियों के साथ सरकार उन्हें ठीक से व्यवहार करती रही है। ये पहली बार कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरह से कानून अनिला सिंह होना चाहिए। अनिला सिंह, दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। अपराधियों के साथ समाजवादी पार्टी क्रैकडाउन कर रही थी। दिस इज द क्लेम ऑफ आईपी सिंह। प्लीज रिस्पॉन्ड टू हिम। इज इट अ फैक्चुअल स्टेटमेंट? अनिला सिंह। आईपी सिंह जी, शांत हो जाइए। मुझे मालूम है 2017 तक आप भारतीय जनता पार्टी में ही थे और आपने अभी आदरणीय रामप्रकाश गुप्ता जी का नाम लिया, कल्याण सिंह जी का नाम लिया, राजनाथ जी का नाम लिया। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका जो भी टेन्योर रहा अद्वितीय टेन्योर रहा। दे हैड देयर ओन स्पेशलिटीज, दे वर नोन फॉर देयर ओन गवर्नेंस, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट्स अबाउट इट। बट इन टुडेज डेट उत्तर प्रदेश हैज Yogi Adiyanath ji as a chief minister, and he is a man of action. He is an action hero. He believes in action. He doesn't believe only in words. What he said, he is proving it. मट्टी में मिला दूंगा और मट्टी में मिला रहे हैं और किसी की जरूरत नहीं है कि वो रोक पाए। आपके लगातार बोलने से कुछ सिद्ध नहीं हो जाएगा। All right, we'll have to leave it there. Completely out of time. It's of course a very important debate. The larger question, of course, that it throws up is, of course, there are opposition which will raise voices about whether the crackdown of this mafia, whether it needs to be within the constitutional parameters and norms, and that's also very important when it comes to the entire justice delivery mechanism, because certainly anything beyond the existing justice delivery mechanisms is also something that is bound to raise some serious questions. But having said that, in this particular instance at least, has the Chief Minister of Uttar Pradesh managed to blunt criticism of him in any way, being in favor of either the majority community or any particular caste, etc.? Perhaps the allotments should speak for themselves. We'll leave it there. Anila Singh, Binay Singh, IP Singh and Vivek Bansal, thanks so much for joining us this evening.